Exaltation, I just shown you, okay, predictions part we will cover step by step. Okay, but first you need to understand this allotment. Okay, then we can learn the other rules and practical applicability we will see for every planet. Anybody in this session who have not understood this table? Don't worry about exaltation, debilitation, and results. Results we are discussing soon. But other than this, how to use this table, I hope everybody understood. ठीक है, सबने कैमरा बंद कर रखा, वो समझ में भी नहीं आता ना शक्ल देख के आया कि नहीं आया. ठीक है. अच्छा अजय जी, आपको एक्सेप्ट मूल त्रिकोण बाकी समझा. नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मूल त्रिकोण नहीं आया, कोई इशू नहीं है, बट इतना तो समझ में आ गया ना कि देयर इज सम पर्टिकुलर डिग्री फॉर मूल त्रिकोण. यस यस, इतना आ गया, अभी काफी है. ठीक है, मूल त्रिकोण पे हम चर्चा करेंगे अभी. ठीक है, तो अब अपना उस पे दोबारा लौट के आते हैं और दिस पॉइंट. Here, first principle says planet is considered strong when it's in its own sign. Now you know the degrees of own sign also. Now you know the degree of exaltation sign. Friendly sign also you know. Okay. These all are considered as a strong planet. But in Nadi, with this, we also see the sign occupation. Means what? Dispositor. Planets around the planet are the prime deciding factor. Surrounding means what? Maybe some other planets are placed in same sign, in 212 or in 311 also. Again, the same concept is coming, supporting. It is supporting the planet, it is influencing the planet, and by these factors also we can decide whether the planet is strong or weak. Okay. Now, winning planet is also considered strong. Now, what is winning planet? Winning planet is a planet which is ahead of other planet, degree-wise. In Vedic, there is a concept we call it Graha Yuddha. Okay, that is more technical thing in Graha Yuddha. You need to consider some other factors, but in Nadi astrology, this also we call it Graha Yuddha, similar name. Okay, in BNN book, you will see in many charts, Rishi is using the word Graha Yuddha between these planets. Two planets placed in same sign. Okay, the planet which move ahead degreically. One planet is 13 degree, B planet is 15 degree. Means what? B planet is moved ahead. It means that is a more winner or winning planet in between those two planets. So if you need to decide the what we call the impact of two planets in between this combination, you need to understand the planet which is moving ahead that is going to win the situation. Okay, so whenever we use this concept, at that time you will understand it. Okay, but for now, just understand this: two planets, three planets in one sign. The planet which is at highest degree is considered as a winning planet. Okay, this is what the second point is saying. Ha, Mukesh. Can we say that when says Sun is in planetary war with say Saturn or Rahu and winner, so can we interpret like that Sun was in difficulty, but now due to winning degree, the difficulty is over? Yes, we can say it. Okay, but okay, so many of you from the Vedic background, I think you understand like Sun and Moon, they never participate in Graha Yuddha. Okay, Sun, Moon, Rahu, Ketu. Okay, but here this is maybe some other planet. Yeah. No, here you can take Sun also.
Okay, okay. In Nadi, we can take Sun also. So this is the difference in Grahayut. Okay, the name is same, but that Grahayut is something else. This is something else. Okay, so whatever you are saying, that is correct. Yes, Manishi. अगर एक ही हाउस में एक प्लेनेट एक्सॉल्टेड बैठा है और दूसरा प्लेनेट भी साथ में है तो भी हम टेक्निकली अगर सपोज एक जगह मरकरी है और एक जगह एक ही हाउस में जुपिटर भी साथ में है, मरकरी एक्सॉल्टेड है बट डिग्री वाइज जुपिटर ज्यादा डिग्री का है तो जुपिटर ही विनर बन जाए तो जुपिटर ही विनर बनेगा. सी विनर बनने का यहाँ मतलब थोड़ा सा अलग है. विनर मतलब ये नहीं होगा कि वो रिजल्ट में कुछ बहुत अच्छा दे देगा एक्सॉल्टेशन. ऐसा नहीं. एक्सॉल्टेशन का रिजल्ट जो होगा वो एक्सॉल्टेशन का प्लैनेट देगा. ठीक है. विनर का आपको ये काम आएगा जब हम कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे तब. ठीक है, ये हम करेंगे डिटेल में. अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो. ठीक है, अभी तुरंत आप एप्लीकेशन पे मत जाइएगा क्योंकि एप्लीकेशन कोई एक को लेके नहीं करेंगे. वी हैव टू मिक्स 2-3 थिंग्स. ठीक है. सो एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो डोंट go for the application right now. The first understand the rules. Okay, don't worry, we have enough time. We will discuss enough charts. So ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी एक एक करके. ठीक है. So अभी फिलहाल आप इतना समझो कि degree ahead is a winner planet. That's it. Okay, whether that is a retrograde. Now another question can arise ना. Retrograde planet है तब, combust planet है तब. जैसे अभी आपने exaltation का पूछो, combust भी हो सकता है, debilitation भी हो सकता है. So we will discuss everything. So give us some time. Okay. So first understand the all rules. So once you understand the rules, you can apply those rules in charts quickly, one by one. ठीक है. Now the third point is important. Third point says when a planet is alone in the sign and there is no adjoining planet and there is no planet in the adjoining houses or in the 7th house. See here, in bracket is written except Rahu Ketu. It means Rahu Ketu plays role here. Okay. But let's say if there is no planet in 212 or in 7th houses, it is considered very weak. Okay, even exalted planet is considered helpless in this situation. It means what? I have given an example of this also. In one of chart, planet is exalted, but there is no planet in 212 and 7. It still be considered as a weak. This is something, I think this is what somebody is asking in today's session. Okay, so 212, 7 support is important in Nadi astrology. This we have seen in the last session. 1, 5, 9, 3, 7, 11, 12, 2, 12th house is planet, which we call aspects. Okay, these are the aspects. In all of these, 1, 5, 9 is a major channel for the combination. Okay, 3, 7, 11, especially 3, 11 will act as the planet which can support. हाँ भरत जी बोलिए. हम टोटल काउंट करें 1, 5, 9, 2, 12, 3, 11 और 7 तो ऑन द होल एक प्लेनेट का 9 हाउसेस पे इम्पैक्ट या कंट्रीब्यूशन 12 में से 9 बन जाते हैं सर इस हिसाब से. दैट्स व्हाई इट्स बिकम. नहीं, आप अभी भी इसमें आप समझे नहीं. एक्चुअली आप क्या कर रहे हो कि अब प्लैनेट एक कोई ग्रह अगर लग्न में बैठा है तो आपको ही लग रहा है कि वो ग्रह ने सब तो कवर कर लिया. बचा क्या इसमें? खाली 6, 8 और 4. 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस ये तो बचा.
बाकी सब कवर है एट एंड 4, 10, 6, 8 हाउस। ऐसा नहीं है, इसलिए नीचे ब्रेकअप भी दिया गया है इसमें ना। द मेजर पार्टिसिपेशन इज 159 ओनली, जो रिजल्ट आपको देगा वो 159 ही देने वाला है, ठीक है। जो अदर है वो आपके सपोर्ट है, वो आपको बता रहा है पास्ट फ्यूचर, वो आपको बता रहा है किस तरह की कंडीशंस होंगी। रिजल्ट स्ट्रॉन्ग वीक होगा, हाँ, रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा। रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएंगे, बाकी सारी चीजें आपको वो रिजल्ट को शेप दे रही है, शेप वो शेप देंगी, ठीक है। बट जो रिजल्ट है वो तो 159 है, 1597 से ही रिजल्ट बनना है, डिस्पोजिटर से भी, ठीक है। बट जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब तो उसको शेप देंगी, उसमें कलर डालेगा, शेप डालेगा, वो बता रहा है, ठीक है। क्योंकि शुरू में मुझे भी लगता था ऐसे सारे कवर हो गए, बचा क्या इसमें। सो देयर इज अ वन बुक, उसमें उन्होंने 4th हाउस भी जोड़ दिया, 4th एंड 10th भी इसी नाड़ी में। अब बचा क्या इसमें, 6 और 8 हाउस। तो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग शांति से सोचेंगे ना बैठ के, तब को समझ में आएगा कि नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड जो कॉम्बिनेशन, दैट इज ओनली 1597 डिस्पोजिटर, रेस्ट ऑफ अदर्स आर सपोर्टिंग एंड इम्पैक्टिंग। सर इसमें एक चीज और भी मैंने पढ़ी थी कहीं हम्म। कि अगर कोई प्लेनेट 27.5 डिग्री या उससे ज्यादा का है तो वो उससे नेक्स्ट हाउस में काउंट होता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, मतलब हाँ सिमिलर, जब आपने बोला काफी हद तक आप सही जा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर भी हम बात करेंगे पॉइंट पे। ये यही तो हमें प्रॉब्लम होती है व्हेन यू रीड द बुक्स, ठीक है। हमें लगता है बुक्स में ये है, तब एज इट इज अप्लाई करते हैं, करेक्ट। पर थोड़ा सा वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो या तो कोई आपको बताए तो पता लगेगा, नहीं तो जब आप उसको टेस्ट करोगे आप चार्ट्स पे रिजल्ट, तो आपको वो चीज डिफरेंस समझ में आता है। तो वो हम लोग करेंगे ये सारे पॉइंट्स पे, ट्विस्टेड है थोड़ा सा ही। हाँ गौतम जी। हेलो हाँ सॉरी, गौतम, मेरा नेटवर्क यहाँ पे स्लो है तो मेरा कैमरा ऑन नहीं है। कोई दिक्कत सर नहीं मेरा सर। एक जस्ट हैव अ स्मॉल क्वेश्चन, लाइक लेट्स से जुपिटर इज प्लेस्ड इन Sagittarius sign at 24 degrees हम्म and in the same sign Ketu is placed at 29 degrees. हम्म So who would be the winning planet? How we are going to classify it? केतु ओनली, Ketu only. यस। So we just have to consider the degrees, not the retrogression of Ketu. Like Ketu is ahead in degrees, that means he is the winning planet. बस Simple way. सिंपल। Okay. बट व्हेन वी कंसिडर द प्रोग्रेशन ना, वहां पर केतु के डिग्री मैटर करेंगे, ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है। बट व्हेन यू सी द लीनियर कॉम्बिनेशंस, यू हैव टू गो टू द फ्लो ऑफ द चार्ट, ठीक है। चार्ट का रोटेशन कैसा है, हम उसी रोटेशन पर डिग्री वाइज चलेंगे। That means we can write like this, that Ketu is ahead of Jupiter in this case. सिंपल, So the combination we will interpret like this. यस। Okay. Thank you very much. क्योंकि देखिए अभी वो कहाँ जा रहा है, केतु कहाँ से आया है, इसे मत, जो कॉम्बिनेशन स्टैटिक कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हम उस चार्ट से ही लेंगे। वो चार्ट आपको मिल गया, उसमें डिग्रीज मेंशन है, हमने उसको नोट कर लिया, बस, Okay. है ना। बट यस, व्हेन वी इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, देयर इट विल मेक सम डिफरेंस। Sure. तो वो Thank you हम very उसको much. भी करेंगे इसको, है ना। Yeah. Thank you very much. Thank Yeah. you. Okay, so 159 aspect considered very strong because these are the main participation for the combination. 37 aspect will give medium effect. It is the planets which give strength or support. 212 aspects modify the results as per the relationship with planet under consideration. What is the modification means here? 159. हाँ हाँ बोलिए। either increase, decrease. Either increase or decrease, and whatever this 159 combination, this trinal is a result, okay.
that result, how you are going to achieve it. The karma, the action part, okay, that is from the second house. Second house has friendly planet that combination result will be achieved without difficulty. Without difficulties and without much struggle, okay, and Yes. all these things. And 12 means past, for which you are experiencing this particular result, okay, for which karma, what you have done, that is what 4, 8, 12 combination. It means especially 12th house is showing that thing. Okay, so it means technically when you see the result quickly, okay, if you want to see the result roughly and this, you just see the 159 houses, just see the strength 311 and 7, okay, and then apply 2, 6 and 10 combination. So you have to predict result of 159 only, okay, but how that result is going to achieve, that you can predict by using 2, 6, 10. Okay, so this whole process is looking very easy, but in terms of implementation, it will take time. Okay, so with practice, it will be easy for you all. But for now, just focus on this 159 only. 159, 311 as a support. Okay, 212 we will introduce after some time. Okay. हाँ अजय जी बोलिए. So this 159 impact is only if there are planets. If no planets, then no impact, no aspect. No planet means no combinations. Okay. If one planet is there, okay, one planet in some sign is there, no? So it will deliver some result. Okay, some planet may be in 311, so that will modify the result, that will give some another flavor to result. So result is always there. Okay, let's say if no planet in 159, then okay, obviously there is no any combinations for this, but during progression, if let's say Aries sign, no planet 159, progression is happening in Aries. Okay, no planet is there, but still Aries sign, Mars you have to take. Okay. Okay, there is a one more concept, which maybe in the next slide I will explain. That is again very interesting. Let me reach to that point. Okay, before that, discuss about something about retrogression. Okay, these are the basics of retrogression only. Okay, there are some more points for the retrogression that we will discuss when we discuss about progression. Okay, but for now, retrograde planet aspect 12th house from its position. Okay, therefore, while analyzing a chart, it should be placed in previous side. And then to consider yoga. Okay, so I think this is what Mridula ji is asking. Okay, so there is a, but you are asking about Rahu. Okay, so Rahu and Ketu you can't place in 12th house. Except Rahu, Ketu, for other planets we can move in previous sign. You see the third point here. Okay, Rahu, Ketu should not be put in previous house. Okay, they are always retrograde. Okay, but yes, in terms of impact, there is an impact in previous house, but we can't move it. Okay, so it means whenever we make the combinations, correct, with retrograde planets, this is what this first rule says. When you make combination and you see the retrograde planet, so you need to shift retrograde planet to previous house. And you see the combinations from there. Clear? Let's say Mars is retrograde in Aries. So as per this rule, you need to shift Mars in previous sign. Previous sign means Pisces. So from Pisces, you need to consider the combinations of Mars. Clear?
So retrograde planets have something to do with past life as well. There Oh. is much to it in especially for the past life thing. वो है Okay. ठीक है, वो करेंगे हम उसको भी, उस टॉपिक पे भी आएंगे, सर ठीक है. बट हाँ, but before that you need to understand the arrangement of retrograde planet, how we are arranging in the charts, okay, and then we can understand the results of this retrograde. मनीष जी कुछ कह रहे थे आप? सर ये जो बीच वाली लाइन है इसका क्या मतलब है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज इफ इट इज इन द टू साइन. बताता हूँ उसको भी. पहला वाला समझ में आ गया आपको? यस सर. ठीक है, ये सब लोग यूज करते भी हैं आई थिंक ऑलरेडी अभी, ठीक है. हाँ गौतम जी, कुछ आपका कुछ क्वेरी था? So that query was regarding to the second line. I think we are Second line. about to clear it, no? So that's हाँ, why I second. removed my hand. ठीक है, सेकंड पर भी डिस्कस नहीं कर रहा Okay, thank you. Thank So you. second line says, in our example, our Mars is in Aries, correct? Retrograde Mars. So as per first rule, I have shifted Mars to Pisces. Yes, Okay, sir. now I can check the combination from Pisces. Okay, Pisces sign, Cancer and Scorpio. Okay, Yes. whatever planet is placed there, I can make combinations. Okay. Now second line says retrograde planet is considered as if it is in the two signs. It means you need to consider yoga from the Aries sign also. It means retrograde planet can create two different combinations. One from the actual house, one from the previous house. This is what this second line means. Right. Clear है sir. Clear हो गया? गौतम जी, clear? Yes, sir. Thank you very much. Clear. And third rule says this is specially about Rahu Ketu. Okay, for all planets you can shift it to previous house, but for Rahu you should not put in the previous house. This is the And third. sir, one point, sir, if by retrogression like Saturn is in Capricorn, initially it was in Aquarius, so then we don't have to take it in previous sign if it by retrogression already in previous sign. That you need to check every time whenever you cast the chart. You need to check that at that we have year. to check. At that year, how retrograde Rahu or this Saturn, you're talking about Saturn, okay? How Saturn is retrograde during that year. Okay, as per that, we need to use this. If it is genuinely retrograded, okay, then we can check in the previous sign. Otherwise, like, it started retrograding in Aquarius, that we will take in Capricorn, but yes. अगर वो पीछे आ चुका है पहले ही तो नहीं retrogression से, तो नहीं लेंगे. So this is something which we required in softwares. This is not given in the software. Sometimes we make mistakes with. हाँ रविंद्र जी. सर कैंसर लगन की कुंडली है और 11th हाउस में रेट्रोग्रेड मरकरी है सर. तो उसकी दशा में क्या हम उसका 10th हाउस का रिजल्ट माने सर, या 10th 11th दोनों का? अच्छा, if you talk about दशा, correct, विंशोत्तरी दशा you are talking? जी. तो विंशोत्तरी दशा में डिपेंड करता है कि आप क्या सिस्टम आप चला रहे हैं. एज पर केएन राव जी, he is taking 10th house 11th both. Okay. So if you read the books like Vimshottari, Predicting Through Vimshottari Dasha by K.N. Rao and some other articles of K.N. Rao ji, so you will understand he is taking planet in 10th house, also the aspect from the 10th house. It means, let's say if Jupiter is retrograde in 11th house, correct? And Jupiter Dasha is going on. This is what you are saying? सर हिंदी. अच्छा ठीक है, सॉरी. आपने बोला कि 11th हाउस में है जुपिटर, जी रेट्रोग्रेड है, ठीक है. जी जी. दशा में क्या होगा कि उस जुपिटर को आपको 10th हाउस में लेना पड़ेगा.
ठीक है, 10th हाउस से जुपिटर का सर मरकरी सर, मरकरी है, ठीक है, मरकरी लेते हैं। जी। मरकरी लिया आपने, वो 10th हाउस से भी कंसिडर करेंगे, उसको 11th से भी कंसिडर करेंगे, दोनों से। तो जो योग, जो 10th हाउस से जो मरकरी के योग बनते वो भी मतलब वो भी लेंगे, वैलिड होंगे? वो भी वैलिड होंगे। 7th हाउस एस्पेक्ट भी वैलिड होगा उसका जी। 10 से, और 11 से भी 10th 7th एस्पेक्ट वैलिड होगा। ओके ओके सर। ठीक है, जी नाउ सर। आप जरा सोचो, अगर इस मरकरी की जगह पे जुपिटर आ जाए जी तो क्या होगा? तो होगा ये कि जी। 10th का भी रिजल्ट आपको देगा वो, हाँ जी। ठीक है, 2nd का भी रिजल्ट देगा, 6th का भी रिजल्ट देगा, ओके 4th का भी रिजल्ट देगा, ओके। ठीक है, और 11th का भी रिजल्ट देगा। अब 11th में जुपिटर रखोगे तो वहां से भी आप 5 9 7 एस्पेक्ट लेना पड़ेगा। हाँ जी। इट मीन्स कि 3rd हाउस का रिजल्ट भी देगा, 7th का भी हाँ देगा, जी। ठीक है, और हाँ जी। 5th का भी देगा। जी। सो टेक्निकली ऑलमोस्ट 10 हाउसेस यू हैव कवर्ड। ओके सर। आप प्रेडिक्शन करेंगे इसका, जी ठीक है, तो आसान है ना करना है। जी। जी हाँ। मतलब थोड़ा थोड़ा सा हिंदी बढ़ा दीजिए सर, सारा इंग्लिश में ही चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप रिमाइंड कर देते हो, मैं कर लूंगा हिंदी, ठीक है, ध्यान जी सर। रखूंगा जी इसका। जी सर। सर रेट्रो थैंक यू सर। प्लैनेट तो पूरी पृथ्वी को एक्टिवेट कर देगा। कर देगा वो, तो वो मेथड गलत है, वो गलत है। तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें। हम्म। यू कैन टेक द प्लैनेट इन प्रीवियस, पहले पिछले हाउस में आप लो उसको, आप ठीक है, वहां एस्पेक्ट एस्पेक्ट मत लगाओ, आप पोजीशन लो पिछले हाउस से, बस और उस हाउस से भी आप लो, बट जो एस्पेक्ट वगैरह लगेंगे आपके उसी उसी हाउस से लगने हैं, दोनों से नहीं लगने चाहिए। फिजिकली तो वो फर्स्ट हाउस में ही होता है। फर्स्ट हाउस पे ही है, ठीक है। हाँ अजय जी, आपने एंड्रेस किया। सर इसमें डिग्रीज देखनी है क्या, या जस्ट ब्लाइंडली विल assume that previous house का impact also? मतलब इसमें डिग्री probably Saturn is retrograde but around 29 degrees, तो उससे कंसिडर करना है कि वो प्रीवियस see there is a one point you all can write it down, okay, this is something for the research, okay, this is not a proven, okay, I'm still working on it, so you can write it down, like if planet is retrograde and placed in 5 degrees behind and next sign, both, okay, sometimes 4 degree also, let's say 4 degrees, okay, not 5, okay, 4 degrees in current sign, 4 degrees in next sign. A planet is placed in between these degrees. Okay. So what observation says, you don't need to consider retrograde. You need to consider it in the same house. ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, अगर कोई ग्रह है चार रेट्रोग्रेड है, ठीक है, और 4 डिग्री करंट साइन के और 4 डिग्री प्रीवियस साइन के, अगर इन बिटवीन दिस डिग्री में अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वहां पर रेट्रोग्रेशन के लिए प्रीवियस साइन में ना लेके आप उसी साइन से ही योग बनाएंगे, okay, but this particular thing is not given in books, so I'm working on it, और ये काम करता है फिलहाल अभी, आप लोग भी और टेस्ट आपका करें, मतलब है फीडबैक। जैसे आपने बताया कि मार्स जो है एरीज में है रेट्रो 4 डिग्री का है मान लीजिए, तो हम उसको पाइसिस में 4 डिग्री ना माने, मतलब नहीं उसको नहीं, हम एरीज से ही काउंट हम करें। उसको पाइसिस में लेंगे ही नहीं, हम एरीज से ही चलाएंगे। एरीज से ही चला। हाँ। ओके सर। तो ऐसे तो सर सारे प्लैनेट्स ही ऐसे होंगे, मान लीजिए कोई 10 डिग्री का भी है एरीज में, तो वो 10 डिग्री एरीज टू 10 डिग्री पाइसिस जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो 10 डिग्री एरीज में है, रेट्रोग्रेड है, तो प्रीवियस साइन में आप लेंगे उसको। ओके सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये कस्पर डिग्रीज तक के लिए बस। ओके सर। पूरा 10 डिग्री का मतलब है कि ऑलरेडी वो तो बहुत अंदर जा चुका है उस बेल्ट में, जी जी, तो वहां नहीं। ओके ठीक है,
तो इस पे ये आप लोग इसको फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग मोड पे रखें. दिस इज नॉट अ प्रूवन रूल. ओके, तो रूल से बोलते हैं कि नो मैटर डिग्रीज रेट्रोग्रेड है तो आपको प्रीवियस साइन में लेना है. बात खत्म. इतना सिर्फ क्लियर है. ठीक है अजय जी. तो जो आपने पूछा उसका आंसर फिलहाल अभी ये है कि डिग्रीज चाहे वो लास्ट डिग्रीज में है ये 29 या 28 उसमें, तो रेट्रोग्रेड हमको लेना चाहिए फिलहाल, ऐसा बोलता है बुक्स. ठीक है. Yes. बट जो पॉइंट मैंने बताया वो जस्ट आप उसको आप लिख के रख ले, उसको हम टेस्ट करेंगे. Okay. रेट्रोग्रेशन में थोड़े से रूल्स अलग हैं इसी रेट्रोग्रेशन के प्रोग्रेशन में. ठीक है, वहां पर रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. बट अभी ये जो रूल्स आप देख रहे हैं दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कॉम्बिनेशंस. ओके, नॉट फॉर द प्रोग्रेशन. यस नागार्जुन जी. Sir, for example, if Mars is placed in Leo and it is getting retro, so if you take backward house, it will be a Cancer. That will be a debilitation of a Mars. So how the result varies? Like one is debilitation, one is like a friendly sign. Yes, it will give both kind of result. Mixed But result. not mixed. It depends upon the progression, na? At what time what activates. Okay, okay, है ना? okay, You have to use like that. See, okay, again, sir. what result we can expect? Now this question itself is something क्या बोलते हैं, गड़बड़ क्वेश्चन है. For result always depends upon the progression, na? At what Yes, sir. progression, what combination is creating, result depend upon that. It's easy. Okay, okay, ठीक है? okay, sir. Thank you. Yes. Yes, कृतांजलि जी. सर अभी जो आपने बताया था रेट्रोग्रेशन का रूल टेस्ट करने के लिए कि अगर लास्ट की डिग्रीज में या फर्स्ट की डिग्रीज में, फर्स्ट फ्यू डिग्रीज और लास्ट की डिग्रीज में है, उसी को मैं एक एग्जांपल से जस्ट कंफर्म करना चाह रही थी कि सपोज सैटर्न है वर्गों में, किसी का सैटर्न है 28 डिग्रीज का और रेट्रो है, तो हम उसको प्रीवियस साइन से नहीं लेके, लियो से नहीं लेके, हम वर्गों में ही उसको वर्गों से ही मान चलाएंगे. सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. हाँ भरत जी. हाँ म्यूट पे हैं भरत जी. अगर सर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ब्रॉडली हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेट्रो है तो उसको बोथ हाउसेस में लेंगे. हाँ. अगर हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो हम उसको प्रीवियस हाउस से काउंट करेंगे. ये हमने पिछली क्लासेस में. अभी हम क्या करते हैं, हाँ मैं कंक्लूड करता हूँ इसको. अभी के लिए आप प्रोग्रेशन हम भूल जाते हैं. ठीक है, रेट्रोग्रेशन का प्रोग्रेशन मत अभी करते हैं. ठीक है, अभी बात नहीं करते उस पर, कंफ्यूजन बढ़ेगी. अभी सिर्फ आप ये समझो कि जो रूल्स अभी आपने देखा, प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो आपको उस हाउस से भी योग लेना है, प्रीवियस साइन से भी योग बनाने हैं. ये सिर्फ एप्लीकेबल टू योगाज ओनली, बस. ठीक है, प्रोग्रेशन के लिए रूल्स अलग रहेंगे, वो हम बात करेंगे तब. ठीक है. कुमार साई प्रीतम जी, इज इट क्लियर? एक जनरल डाउट दिमाग में आ रही थी. हाँ तो पूछिए ना. हाँ. जैसे कि सर मैं एक 1962 या 64 बर्थ के एक चार्ट देख रहा था. वहां पे सर जब राहु केतु शायद 28 डिग्री में थे कि राहु, सर वहां पे एक सॉफ्टवेयर में मीन नोड है वहां पे 28 डिग्री है, एक में ट्रू नोड है वो कैंसर 0 डिग्री पे आ जा रहा है. तो किसको माने सर इसमें? आप इसको मेन नोड्स पे रख के चलना. ठीक है सर. ठीक है, और राहु केतु रहेंगे, यू डोंट ठीक है नीड टू शिफ्ट इट टू प्रीवियस हाउस. राहु केतु इज ओके ऑलवेज सर. कंसिडर्ड फ्रॉम द सेम हाउस. ओके सर. ओके सर. ओके, इज नो एनी कंफ्यूजन विद राहु केतु. ओके सर. ठीक है. ओके.
Now this is again very important slide. Okay. Planet in sign prior to its debilitation sign is considered weak, as it is going towards its debilitation sign. Okay. In Sarvar Chintamani, the author Venkatesh Sharma, while discussing Dasha in chapter number 13, has said that the Dasha of Avarohi. Avarohi is a word given to this particular movement. Okay. Avarohi planet is bad. Okay. Avarohi is a planet placed in the previous sign from its sign of debilitation. It means what? We know the debilitation of Sun is Libra, correct? If Sun is placed in Virgo, Sun is placed in Virgo. So Sun is moving from Virgo to Libra towards the debilitation sign. Okay, and especially again, if Sun is placed with in last 5 degrees. Okay, so we consider that Sun as a weak Sun. Why? Because it is moving towards the debilitation. The same concept is used everywhere in the Prashna. If you read Prashna Marga or Devagya Vallabha of Varamihir, okay, they have given these kind of rules. I think 7-8 rules are there. Planet is moving towards the exaltation, planet is moving towards the debilitation, planet is moving towards the enemy planet. So if you read those Prashna books of Varamihir and Prashna Marga and all, you will realize those are the same thing which we are using in Nadi. Okay, whether we can say both are the same, but this principle is very important. You can apply this in Nadi as well as in any form of Jyotish. Okay, like planet placed in a sign previous to exaltation sign is considered what? Powerful planet or the strong planet and is moving towards exaltation. It means planet placed in Pisces sign. That's why I give an example. The Sun in Pisces is considered very strong. Why? Because it's already placed in the friendly sign and moving towards the exaltation sign. That is the best placement for this Sun. Okay. This is what first and second second rule is saying. In any horoscope, strong position of Mars, Saturn, Jupiter is considered important for a successful life. Okay, why Mars, Saturn, Jupiter? I hope you understood. Mars is what? Deha Karaka, Saturn is Karma, and Jupiter is Jiva. These 3 planets becomes very important in Nadi. The placement of these 3 planets is very crucial for successful life. Okay, so whenever you see any chart, first consider always these 3 planets. You can derive the overall course of that person. Okay. Now, the last point says planet under consideration gets support from the planet posited in the 12th house. Quality of support depends upon the relation between 2. Okay, support. And the quality depends upon the relation between 2. Same thing applies to second house. Yes, Gautam ji. Sorry, sir, to interrupt you. So let's say if Saturn is in Virgo sign, but it's retrograde. So Saturn is in Virgo sign. Okay. And if it gets retro, then the concept which we are applying would give the same result, like it is moving towards its exaltation sign. Or yes. So it means now you can create 2 different combinations. Correct. One is from Virgo, another is from Libra. Libra. Okay. No. No, if Saturn is in Virgo, like it gets so retrograde. Retrograde means it is moving towards the Leo.
it is moving towards you, then it will be not considered strong as No. per the concept of Yes. Mr. Venkatesh Sharma. Yeah. It is not moving towards its exaltation sign now. It's Yes. moving backwards Back. towards its enemy sign. Hmm. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So basically, this concept is given in Sarva Chintamani, but it is not an original technique of Sarva Chintamani or Venkatesh Sharma. This is the Vedic rule only, and it equally applicable in all Jyotish forms. You all should read Devagya Vallabha book by Varamir. So there is one complete chapter dedicated only on these concepts. And that is equally applicable in Nadi also. Now, planet in one sign also affect the other sign of the planet under consideration. It means Mercury is in Libra, Venus is in Leo. Okay, then Mercury will affect the other sign of Venus, Taurus. Although they are not connected with Venus directly, but still they will affect the other sign. Okay, again, this is very simple rule. We all are using all day in Vedic also. Second rule is important. This says planet in a sign also capture the significance of the Lord who exalts in that sign. Okay, remember the word exalt in that sign. It means, let's say Sun is in Cancer. Okay, then which planet becomes exalted in Cancer? Jupiter. Okay, so it means here Sun will also have a good effect of Jupiter as Jupiter gets exaltation in Cancer. Okay, reverse can also take place. We know in Cancer, Mars becomes debilitated, correct? So if Jupiter is going to help that Sun, Mars will not help the Sun. Why? Because that is a sign where Mars get debilitation. Correct? See the last line, this explains why Venus in Cancer is considered bad in any chart for the married life. Why? I hope you can answer it now. In Cancer, Jupiter is exalted, Venus and Jupiter both are enemies. This is the reason. So like this, there are many questions which we generally ask, but we don't have answers for it. So this particular one rule, if you understood correctly, you can resolve many of these kind of difficulties. Planet in a sign shows circumstances at the birth of native. Future is stored in the 12 signs which manifest the journey of this particular third rule needs more explanation. With examples, we will see it. Okay, but the second rule is clear. Second is more important in this all three. Yes, Mridula ji, boliye. So मुझे ये पूछना था that for the second rule, like it also depends upon the degrees, right? Always depend upon degree. So here I have not mentioned the degrees. It doesn't mean it is not considered. So when I say Sun is in Cancer, okay. So in order to Jupiter get exalted, Sun should be placed in the same degree. Yes, sir. Okay, then only Jupiter get exalted in that particular. That's why that belt is important. Okay. So let's say like for Aries, we know 0 to 10 degree is a Sun exaltation. If Mars is placed there, automatically Sun will help him. Like this. Okay, but there is a one more what we call
one more answer to this same question. Okay, this rule is applicable if you don't consider degree also. Okay, why? Because if you see the second statement, they say Sun in Cancer will help Jupiter. Okay, Jupiter will help, but Mars will not help. Okay, but if you observe this statement clearly, you will understand degrees are not same for the both. Okay, then how can this be possible? This is only possible if you consider it roughly without degrees. Okay, so this particular rule will helpful you to predict the nature of result for the single planet placed in one sign. Okay, like somebody asks you, okay, Venus is placed in Cancer, what will be the result? Okay, so you can quickly know, okay, Venus result in Cancer, you can predict some result. Also, you know, for in Cancer, Mars is debilitated, so you can know the result of Venus and Mars, how they are together. And Mars is not going to help Venus. And you know the Venus and Jupiter relationship. Okay, debilitation, exalted Jupiter in Cancer, and both are enemies. And we know Jupiter is a karaka of married life. That's why they say Venus in Cancer is not good for married life. Okay, who is the enemy of Jupiter other than Venus? Any other enemy? Mercury. Mercury. Yes. Okay. Moon. So Moon, Mercury. Okay, let's take Moon. Okay. Not Moon, because Moon is owner of Cancer sign. No? Yes, So let's sir. take Mercury. Okay, Rahu also. If Rahu is placed in Cancer, you know Jupiter, Rahu, they are not good. Okay, so again that will, you know, now you have to pick the common Karak Tattva of Rahu and Jupiter. Because that particular Karak Tattva is going to spoil. Venus and Jupiter, what is the common in between them? What is the area? Venus is wife, Jupiter is married life. Something is common in between them. Obviously, they are going to create some trouble in that area. Okay, so that's why the Karak Tattva is important. The amount of Karak Tattva, the knowledge of Karak Tattva you have, you can easily use these principles. Otherwise, you will face difficulties. Yeah, Kumar ji, बोलिए. सर दो क्वेश्चन है सर. हाँ. पहली बात यह है कि सपोज सर मार्च 28 डिग्री कैंसर पे है तो अराउंड डीप डेबिलिटेशन पे हो गया, तो उधर सन 4 डिग्री पे है, तो क्या सन सपोर्ट करेगा कुछ मार्स को अपने डेबिलिटेशन से निकलने के लिए? मतलब पीछे से एक सपोर्ट तो आ रहा है ना सर? नहीं, दोबारा बोलिए क्वेश्चन. सर मार्च 28 डिग्री कैंसर पे है तो डीप डेबिलिटेशन पे है. अभी सन 4 डिग्री कैंसर पे है, तो सर सन क्या सपोर्ट करेगा मार्स को अपने डेबिलिटेटेड स्टेट में? कुछ मतलब अच्छा चीज नहीं. मतलब सपोर्ट नहीं करेगा सर? नहीं. ठीक है सर. और एक दूसरी क्वेश्चन थी कि सर यहाँ पे हम कुछ नीच भंग प्रयोग करते हैं क्या नाड़ी में? नाड़ी में नीच भंग का ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेंशन. साइन एक्सचेंज वगैरह अगर हो तो तब भी साइन एक्सचेंज होगा तो फर्क पड़ेगा बिल्कुल. और सर रेट्रोग्रेड होने पर भी रेट्रोग्रेड होने पे भी पड़ेगा फर्क. रेट्रोग्रेड होगा तो आपको 2 कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे. हाँ तो सर. वो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. हाँ सर. हाँ सर. है ना, जो प्रीवियस साइन का भी मिलेगा. ठीक है सर. मतलब ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे कि पराशरी में 5-6 हैं, वैसे नहीं है सर? नीच भंग होने के बाद भी वो रिजल्ट देते हैं. नीच भंग भी कंप्लीट उसका कैंसिलेशन नहीं होता है. ओके सर. रिजल्ट तब भी मिलेगा. ठीक है. अगेन डिपेंड्स विच एज. ठीक है. तो कभी भी नीच भंग कंप्लीट, कभी नीच भंग नहीं होता पूरा. यस भरत जी बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन ये था
कि जितने भी हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, या आपने कुछ देर पहले ना एक लिस्ट भेजी थी जिसमें टोटल कॉम्बिनेशन योग थे, उसमें राहु, जुपिटर एंड सैटर्न का भी एक योग था, जिसको आपने अष्टलक्ष्मी योग लिख के भेजा था। लेकिन सर जब भी हम मतलब पिछले कुछ समय से ग्रुप में पढ़ रहे हैं, डिस्कशंस आ रही हैं सभी लोगों की, जब भी, लेकिन आपने शुरू में एक योग ये भी पढ़ाया था कि अगर जुपिटर से सैटर्न और राहु 1, 2, 5 और ट्राइन में हो तो हेल्थ इश्यूज रहता है। तो मतलब इस योग को ऐसा समझा जाए कि अगर ये योग बन रहा है कि हेल्थ के लिए बुरा है लेकिन प्रोफेशनल गेम्स के लिए अच्छा है, ये जुपिटर राहु और सैटर्न वाला योग। यस, सी जुपिटर राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन, ओके। सो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जीव कारक, ओके, कर्म कारक, राहु का एक दूसरा मतलब भी होता है एक्सपेंशन, बृहद, या ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है जी, ठीक है। बट इसके और भी कॉम्बिनेशन है ना, ये सेम एक रिजल्ट नहीं देने वाला, इसके और 100 रिजल्ट बनेंगे। तो हो सकता है मैं वही कह रहा हूँ कि ये हेल्थ के लिए बुरा है और प्रोफेशनल गेम्स के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल के लिए अच्छा है। यस यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, और देखिए जुपिटर सैटर्न राहु, ओके, या राहु सैटर्न जुपिटर, इसके भी अलग अलग मतलब निकलेंगे। अब कॉम्बिनेशन सेम ही है। हाउसेज को कंसीडर करेंगे सीक्वेंस या डिग्री कंसीडर करके, डिग्री करके करेंगे ना, डिग्रीज करके आप उसमें करेंगे, या कि मतलब पहले कम डिग्री वाला फिर दूसरा, ऐसे ऐसे इसको कंसीडर करें। राइट सर, थैंक यू। ठीक है। तो वहां पर जुपिटर क्या है कि वो राहु को ऑलरेडी पास कर चुका है, तो पहले ऑलरेडी बहुत सफर करके वो नेटिव बाहर निकला है। अब उसका नेक्स्ट, अब वो राहु से नहीं मिलने वाला, या तो वो एक अलग, उसकी इंटेंसिटी कम है ना, वो हेल्थ ट्रबल्स और ये सब की। मतलब जुपिटर सैटर्न राहु होगा, जुपिटर पहले सैटर्न फिर राहु से मिलने वाला है, करेक्ट। तो उसमें फिर एक अलग तरीके से वो बिहेव करेगा, वो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है हेल्थ इश्यूज की। नाउ एक्सचेंज, exchange of sign between planet is considered good or bad, both, okay. It depends upon the relation between two. Exchange of signs between friends is considered good, this is understood, okay. And exchange between enemy planets is considered bad. So for example, exchange of sign between Mars and Mercury is bad, okay. किसी को एक्सचेंज में कोई दिक्कत है? किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ देर पहले, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सर एक्सचेंज में जो है, सपोज एक्सचेंज के बाद अगर एक क्वेश्चन था, रेट्रो के बाद अगर वो ऐसे साइन में आता है, वहां से एक्सचेंज कंसिडर कर सकते हैं? सपोज ओके, रेट्रोग्रेशन के बाद वो साइन में आया जहां पर एक्सचेंज योग बनता है, तो कर सकते हैं, कंसिडर करना है कि नहीं करना, भी ये पूछ रहे हैं, वहां से कंसिडर कर सकते हैं। और एक्सचेंज का ऐसा भी हो सकता है मीनिंग कि एक्सचेंज के बाद वो जिस साइन में जा रहा है वहां पे अच्छे कॉम्बिनेशन है और ओरिजिनल पोजीशन में बैड कॉम्बिनेशन है, तो वो अचानक से उसकी जिंदगी एकदम से वहां पे चेंज हो जाएगी। वो ही वाज इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, और एक्सचेंज के बाद जैसे कोई बहुत संकट में था व्यक्ति, और एक्सचेंज के बाद उसको तुरंत संजीवनी मिल गई, वो जंप करके वहां चला गया। या रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स भी हो सकता है, और सीधा मतलब ये हुआ कि अगर रेट्रोग्रेशन होके पीछे गया, वहां से जो भी रूल एप्लीकेबल होंगे वो सब लगेंगे, चाहे वो एक्सचेंज के हो। हाँ नहीं, रेट्रोग्रेशन तो आपने बता दिया। जैसे रेट्रोग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सचेंज है,
तो ओरिजिनल पोजीशन में जहां है एक्सचेंज से पहले वहां पे बैड पोजीशन में है, एक्सचेंज के बाद वो अच्छे कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो वो एकदम से उसकी लाइफ में चेंज आ गया। हाँ, वो एकदम से भी नहीं होता। देयर इज अ रूल फॉर इट कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ। हाँ, ये फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में कितना पीरियड लेना है, दैट यू विल दैट एक्सप्लेन डिपेंड्स। समटाइम। यस, हाँ, वो करेंगे उसको, बट वो दोनों रिजल्ट मिलेंगे उसको। हाँ, ठीक ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब कि इसको हम बाद में कर सकते हैं, बट इसको अभी भी हम देखते हैं। सन इन जेमिनाई हम बात कर रहे थे अभी ना। Sun in Gemini is known as a well-placed sun. Okay, we have seen this from here. 11th house is the exaltation house. Okay, from here 3rd house is own sign. 3 and 11 house effect are direct effect. It can be observed that father of such native are well set in life. This is with respect to the sun. Okay, now what I want to show you is this. See the first rule. There is a new concept, we call it imaginary exchange. Someone posted this thing in the WhatsApp group, I think. I don't know who. Imaginary exchange के बारे में कुछ बात चल रही. What is that? Exchange, we know, sign exchange and all. Imaginary exchange is something new concept in Nadi. Not it is already given, but very few people use it. So, Sun in Gemini, imaginary exchange also happen with Mercury. Now you know Sun in Gemini, there is no any exchange. Okay, Mercury may be placed anywhere, doesn't matter. Okay, but still you need to imagine it like exchange. Okay, Sun in Gemini, Mercury in Leo. Are you understanding what I'm trying to say? Jupiter in Aries. Okay, this is the position. Mars may be placed anywhere in the chart, doesn't matter. But imaginary exchange is what? Mars in either Sagittarius or Pisces. Okay, this is the another form of exchange. Understood? Any doubt here? Yes, कुमार जी बोलिए। सर आप फिर से समझा दीजिए सर, हिंदी में थोड़ा। हाँ, हिंदी में बता देता हूँ कि ये जो स्लाइड है ये बता रहा है सूर्य का रिजल्ट जेमिनी साइन पे। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इमेजिनरी एक्सचेंज। ठीक है, नॉर्मल एक्सचेंज आपको समझ में आ गया, दो ग्रहों के बीच में एक्सचेंज है, उसमें दोनों ग्रहों का एक दूसरे की राशि में होना जरूरी है, तभी होगा। ठीक है, ये एक काल्पनिक एक्सचेंज है, काल्पनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जैसे सन मिथुन राशि में बैठा, बुध कहीं भी बैठा हो कोई मतलब नहीं उस समय। ठीक है, अगर सूर्य मिथुन राशि में है तो आप बुध को सूर्य की राशि में आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली में ऐसे मानना है इमेजिनरी। अच्छा, मानने से क्या होगा, इसका रिजल्ट कब मिलेगा हमें? इसका रिजल्ट हमको तब मिलता है जब प्रोग्रेशन होता है जुपिटर सैटर्न का, या जुपिटर का या सैटर्न का कोई भी लियो के ऊपर, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा किसका? मरकरी इन लियो। मतलब मेजर प्रोग्रेशन जिसमें अगर करें तो मेजर माइनर दोनों। ठीक है सर। ठीक है, तो इसीलिए जेमिनाई का सन जब रहेगा, तो जब भी जुपिटर या सैटर्न का प्रोग्रेशन होगा तो उनके फादर है ना, वो कोई ट्रेडिंग वाला काम करते हैं, वो कुछ लैंड प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इस तरह के बिजनेसेस में वो जाते हैं। ये तभी होगा जब वो प्रोग्रेशन होगा लियो के ऊपर। तो बहुत से ऐसे चार्ट्स में आपको रिजल्ट ऋषि कहेंगे कि इस प्रोग्रेशन में वो लियो पे पहुंचा, उसने प्रॉपर्टी ली या ऐसा कुछ इवेंट हुआ। आपको समझ नहीं आएगा ऐसा हुआ क्यों, उससे क्या मतलब था। मरकरी बैठा हुआ कहीं पर एरीज में, तो वो कैसे हो गया? ये मरकरी कहीं बैठा है पैसेज में,
तो वो इमेजिनरी एक्सचेंज वहां पर काम करता है. सो इट मीन्स imaginary exchange concept you have to write down separately, okay, in the chart. उसके बाद उसको प्रोग्रेशन को अप्लाई करेंगे, वो काम करता है. इसको टेस्ट करना आपको.